administrative relations between center and states. Yesterday we did what? Legislative relations between center and states. You tell me, what are the conditions in which center gives instructions? Center gives Instructions or in the legislative field of the state. Where center influences the legislative power of the state legislature. How? सर एक तो सबसे पहले आर्टिकल्स नाम या आर्टिकल भूल गई, वैसे आपको सारे बता दूँगी। एक आर्टिकल शायद 253 एक आर्टिकल के अंदर कि जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन। That is not what I am asking. You are not studying well. मैंने वो पूछा ही नहीं है. That is centers legislation in states field. मैंने वो नहीं पूछा है. मैंने बोला centers control over states legislation. ठीक है? Do your homework well. Or when governor reserves the bill for the consideration of the president, and there is financial emergency, when there is money matters ki bills will be kept for the consideration of the president. Those are the matters where center gives instructions to the states with respect to legislations. What you are telling, those are the matters where parliament makes laws on the subjects mentioned over the state list. ये दो अलग अलग चीजें हैं. Administrative relation between center and the state. In part 11 of the Constitution, from Article 256 to 263 deals with administrative relations. Yesterday we saw तीन में relations divide हुई है, ठीक है? One is legislative relations between center and state. Second is administrative relation between center and state, and third is financial relation between center and state. There is no judicial relation because there is one single integrated judiciary. Division of power, distribution of power is not with respect to judiciary. Okay? Because judiciary is single. At the apex is the Supreme Court, and then lies the high courts and subordinate judiciary. Okay? Administrative relations or executive relations means how to deal with those laws that has been framed by the parliament on the state union list, states on the state list, and both of them on the concurrent list. Because the law making power is vested with the legislatures. When legislatures make the law, then you have to implement the law. And while implementing the law, which government, central government or state government, is going to implement what kind of law? ठीक है? If there is an issue between the executive powers of two, union government and central government, what is the remedy? Constitutional remedy. ठीक है? वो सब कुछ इसमें है. इसमें सबसे पहली बात है, the first thing in administrative relations is the extent of executive power. आप अपने इस executive power को, executive power we have dealt when we were studying president. ठीक है? All the executive powers of the union are vested in the president of India, and he shall exercise those powers either directly or officers subordinate to him. Those executive powers, which have been defined in the Supreme Court as well in Ram Javaya case, वो सब कुछ किया है. उन executive powers को implement करना. Same executive powers are with respect to states. And who is the head of the executive power of the states? Governor. And who is the head? President. And in the real sense, the head is Prime Minister and CM. Union government की हद कहाँ तक है अपने executive powers को implement करने की, और state government की हद कहाँ तक है? When we were studying legislative relations, union government or the parliament made law on the union list, state made law on the state list, both are making law on the concurrent list. ठीक है? And जितनी jurisdiction union government की है law बनाने की union list पे, उसको implement करने की executive powers, उसको implement करने की उस law को जो आपने union list पे बनाया, किसने बनाया? Parliament ने.
the executive powers are also vested with the central government. Yesterday we saw that parliament can make law for whole of the India or any part of the India. ठीक है? Same applies with the executive powers. Executive powers of the union extends to whole of India or any part of the India as specified by the parliament. कहाँ पे क्या करना है? They are co-extensive with the legislative powers of the parliament. Remember this. Executive powers of union government are co-extensive with the legislative powers of the parliament, जो यूनियन लेजिस्लेचर है. मतलब जहां तक जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और उसकी ज्यूरिसडिक्शन जहां जहां भी होगी उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत यूनियन गवर्नमेंट के पास है. सेम उसी ज्यूरिसडिक्शन में जिस ज्यूरिसडिक्शन में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. These are co-extensive in nature. The jurisdiction of parliamentary law extends to somewhere and the same jurisdiction applies on the executive powers of the union government. अगर पूरी कंट्री के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है तो पूरी कंट्री के लिए एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास. सेम अप्लाइज विथ व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट. State government's executive powers are co-extensive. State government's executive powers are co-extensive with the powers of the state legislature. जहां तक state legislature law बना सकता है वहां तक state government की भी executive power की पहुंच है. जो cases, जो restrictions state government के law making process पे है, state legislature के law making process पे, वही restrictions state government के executive powers पे भी है. ठीक है? कुछ डिफरेंसेस है वो आगे देखेंगे. स्टेट गवर्नमेंट हैज द एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सटेंडेड जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं एंड दे आर एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट. समझ आ रही है बात? ये हो गई दो. व्हाट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कंडीशन? दोनों बना सकते हैं, दोनों का concurrent list. ठीक है? Concurrent list पे both makes laws, parliament as well as state legislature. Parliament makes law on the subjects mentioned in the concurrent list as well as state legislature. If there is conflict, parliamentary law shall prevail. If there is a conflict between the law of a parliament and the law of the state legislature on concurrent list, जहाँ पे दोनों law बना सकते हैं, parliamentary law shall prevail. But what about the executive powers here? What is the scheme of executive powers with respect to concurrent list? What will happen? So, state executive implement करेगा. जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तब भी सर इम्प्लीमेंटेशन है ना स्टेट में, स्टेट एग्जीक्यूटिव. तो यूनियन लिस्ट में ये लॉ बना रहा है वो भी इम्प्लीमेंट करेगा. अगर पार्लियामेंट का ही लॉ वहाँ प्रिवेल होगा तो पार्लियामेंट ही डायरेक्ट करेगा वो. एक होता है गैस करना, दूसरा होता है इंटेलिजेंट गैस. गैस करो, गैस से ठीक अगर आंसर मिले वो प्रीलिम्स में फायदा मिलता है. मेंस में यू हैव टू एक्सप्लेन. शी इज सेइंग स्टेट एग्जीक्यूटिव विल इंप्लीमेंट. इट इज ट्रू. हाउ? व्हाई? दिस पार्ट यू शुड नो. गेसिंग हर हमेशा नहीं चलती. गेसिंग मे वर्क इन प्रीलिम्स बट नॉट इन मेंस. ठीक है? इफ देयर इज कंकरेंट लिस्ट, या पार्लियामेंट उस पे लॉ बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर उस पे लॉ बनाए, दोनों में कोई भी उस पे लॉ बनाए, द लॉ ऑन द कंकरेंट लिस्ट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट. कीप दिस थिंग इन माइंड. If parliament makes law on the concurrent list or state legislature makes law on the concurrent list, the implementing power is vested with the state government on the concurrent list, unless and until it is specified by the parliament itself that कि ये जो law हम बना रहे हैं उसी में लिख दिया कि that this will be implemented by central government. अगर वो नहीं लिखा है then it's automatically understood that the implementation of this law goes with the state government.
unless and until Parliament itself specifies that this law will be implemented by the Union government. वो उसी law में लिखा होगा. अगर नहीं लिखा, it's automatically understood that the law will be implemented by the state government. कोई भी law बनाए, Parliament बनाए, state legislature, law will be implemented by the state government in case of concurrent list. In case of state list, it will be implemented by the state government, and the jurisdiction is same. जो jurisdiction state legislative powers की है. In case of union list, the law will be made by the parliament, and the jurisdiction of executive power of the union extends to the jurisdiction of the legislative powers of the parliament. जितना वो law बना सकता है जहाँ जहाँ तक, वहाँ तक union government भी अपने implementation और executive functions की ताकत रखती है. ठीक है? Write few lines first. इसमें ये लिखा वो पार्ट 11 आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक. Right? Sir, एक minute, please. The first heading is distribution of executive powers. Distribution of executive powers. Distribution of executive powers. ठीक है? You right? The executive powers has been divided. The executive powers has been divided between the center and the states. The executive powers has been divided between the center and the states on the same lines as legislative powers are divided. As legislative powers are divided. As legislative powers are divided, except in few cases. Except in few cases. जैसे कि ये वाला केस मैंने अभी कहा, जब लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, कंकरेंट लिस्ट पे पार्लियामेंटरी लॉ शैल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ. लेकिन लॉ बनाए पार्लियामेंट या लॉ बनाए स्टेट लेजिस्लेचर, इंप्लीमेंटेशन विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट अनलेस एंड अंटिल इट इज रिटन बाय पार्लियामेंट, अदरवाइज यूनियन गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट. ठीक है? ये वो एक्सेप्शन है. ऐसे ही कुछ यू राइट फर्दर. Thus the executive powers of the center extends to the whole of India. To the whole of India. To the whole of India, and to the exercise of rights, and to the exercise of rights, and to the exercise of rights, authority, and jurisdiction, and to the exercise of rights, authority and jurisdiction conferred on it by any treaty or agreement. By any treaty or agreement. एक तो जहां जहां पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, जिस मैटर पे, वहां यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है. और इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज एनी ट्रीटी, डज एनी एग्रीमेंट, ठीक है, उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए व्हाट एग्जीक्यूटिव पावर्स आर रिक्वायर्ड, आल्सो दे आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है? Even if those executive powers in normal circumstances are at the domain of state government, लेकिन अगर एग्रीमेंट या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इसको हमें फॉलो करना है, ओके, तो उस केस में द एग्जीक्यूटिव पावर्स विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Next line. Similarly, the executive powers of a state. Similarly, the executive powers of a state
executive powers of a state extends to its territory, extends to its territory, extends to its territory in respect of matters, in respect of matters, in respect of matters on which state legislature, on which state legislature, in respect of matters on which state legislature has exclusive right or power of legislation, has exclusive power of legislation. Legislation, जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट वहां वहां एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेगा, जहां जहां स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। If state legislature has the power to make law on the subject of police, on the subject of law and order, on the subject of land, ये सब किस में है? स्टेट लिस्ट में। तो इसको एग्जीक्यूट करने का पावर भी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। You write the next paragraph, third, अब concurrent लिस्ट की बात होगी। In respect of matters, in respect of matters enumerated, in respect of matters enumerated in the concurrent list or list 3, in the concurrent list or list 3, the parliament and state legislatures, the parliament and state legislatures both can make laws, both can make laws। इसमें कौन superior law है कौन नहीं है वो कल हमने किया है, ठीक है। both can make laws, full stop। however the executive powers with respect to these matters, however the executive power with respect to these matters remain with the state governments, remain with the state governments, remain with the state governments, except जहाँ पे खुद ही parliament or the constitution will say it's otherwise, ठीक है। except when a constitutional provision, except when a constitutional provision or a parliamentary law specifically confers it on the center, ठीक है। This was with respect to distribution, ठीक है। You give the second heading in the administrative relations, that is obligation of states and the center, obligation of the states and the center। What is the obligation of a state or multiple states and the central government with respect to each other in terms of these administrative relations or executive powers, ठीक है। Constitution of India itself has restricted the executive power of states। States हैं, हमने इनको executive powers दे दिए हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं अपने किस पे, स्टेट लिस्ट पे जो लॉ बनाएंगे उसको खुद ही एग्जीक्यूट करेंगे। दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। concurrent लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगा तो एक इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों केस में। अब लेकिन इस एग्जीक्यूटिव पावर को जो स्टेट इंप्लीमेंट करता है उस पे खुद ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।
twofold restrictions are there. Number one, the state executive power shall not be used in a sense, in order to demean any law of the parliament. किसी parliamentary law parliament ने बनाया, ठीक है, चाहे concurrent list पे बनाया हो, चाहे union list पे बनाया हो, उसके related state government, state legislature will make a law, ठीक है, या implementation power lies with the state government. दोनों cases में state government must make ensure that we should comply with the laws made by the parliament. इसके खिलाफ कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करो एग्जीक्यूशन का, लेकिन in sync with the parliamentary law, in sync with the parliamentary law. पहली बात, parliamentary law को follow करो. While exercising your executive functions, every state is directed by the Constitution of India. You exercise your executive functions, but your executive functions should be in sync with the parliamentary law. इसके अगेंस्ट नहीं. दूसरा, और इसी में अगर स्टेट लेजिस्लेचर है आपका, योर स्टेट लेजिस्लेचर, आप अपने स्टेट में हो, आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, उसने कुछ लॉ बनाया है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव शुड मेक श्योर कि इस लॉ को फॉलो करे, इसके अपोजिट अपना एग्जीक्यूटिव पावर यूज न करे. बात आ रही है समझ? स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और इसमें बहुत कुछ है, ऑफिसर्स भी आएंगे, गवर्नर भी है. Everyone is told that if legislature is making any law in the state, you exercise your executive powers in sync with that law. हाँ, आपको ये law पसंद नहीं है, you are the council of ministers headed by CM of that state, ठीक है, you don't want this law, then change the law in the legislature. नया law लाओ, ठीक है, नई बिल लाओ, नया law लाओ, फिर नया law जब पास होगा act accordingly. लेकिन आप law नया नहीं ला रहे हो, already there is a law existing, but you are not implementing it. ये हम होने नहीं देंगे. You have to be in sync with the law that is prevailing in the state, चाहे state legislature का या parliamentary law. Arbitrary हम आपको act करने नहीं देंगे. Your action should be backed by the law, चाहे constitutional law, चाहे parliamentary law या state legislature का law. आपको अपने state का कोई law पसंद नहीं, कोई provision नहीं, you can't act arbitrarily. You just introduce a bill in the house, get it passed, make it an act, अपने state में चलाओ काम. अगर नहीं हो रहा है ऐसा, then must act as per the law existing in the state, ठीक है. It also ensures constitutionalism. This provision is one of the provisions that strengthens the concept of constitutionalism. है क्या? Constitutionalism we have dealt with. Arbitrary हम act नहीं करने देंगे. Even if you are chief minister, you are council of minister, या कुछ भी, you don't act arbitrarily. Either your actions should be in sync with the parliamentary law उस field में, or your actions should be in sync with the state law. बात आ रही है समझ? ये है first condition. Second condition is there. Your executive powers should not be used in a sense in order to reduce the authority of the center. बता रही है समझ? State cannot use its executive power in order to reduce the authority of the center. Both center में parliament as well as central government. दोनों की authority को reduce करने का काम एक state नहीं कर सकता. You have your executive functions, executive powers with respect to state list, concurrent list, but you can't use them in a way चालाकी से in order to go against the center, both central legislature as well as central government. ठीक है? In order to have that unity, strength of that country. National security का भी issue होता है, बहुत सारे issues होते हैं. State cannot go arbitrarily. State will say I have the executive powers over the subjects mentioned over the state list as well as the concurrent list. I will exercise these powers like this. हाँ, you exercise, but in sync with parliamentary law, state law, and not go against center as well as parliament. As center, both central legislature as well as central government. दोनों के against नहीं जाना है. You have to be सर झुका के in front of the central power.
be it parliament or the government, ठीक है, Yes. उसके अगेंस्ट आपको, नेशन के अगेंस्ट हम एग्जीक्यूटिव पावर आपको यूज करने नहीं देंगे, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स नेशन। Yes. समझ आ रही बात? इसको लिखो पहले। The Constitution has placed two restrictions. The Constitution has placed two restrictions on the executive powers of the states. The Constitution has placed two restrictions on the executive powers of the state. In order to give ample scope to the center. In order to give ample scope to the center for exercising, in order to give ample scope to the center for exercising its executive powers, for exercising its executive powers, for exercising its executive powers in an unrestricted manner. Thus, the executive power of every state, thus the executive power of every state is to be exercised in such a way, is to be exercised in such a way. Number one, पहला वही in sync with the parliamentary law or the existing state legislatures law, ठीक है? Number one, to ensure compliance, to ensure compliance, to ensure compliance with the laws made by the parliament, with the laws made by the parliament, and any existing law, with the laws made by the parliament and any existing law which apply in the state, which apply in the state. दोनों के खिलाफ you can't go. Second, as not to impede, as not to impede, as not to impede the exercise of executive powers of the center in the state, as not to impede the exercise of executive powers of the center in the state. ठीक है? अब ये दोनों, these are the obligations on the state that with respect to their executive powers they have to follow these things. अगर ये दो चीजें state is not in compliance with, ये नहीं कर रहा है state, then what will central government do? सर वो प्रेसिडेंट को होगा Directly नहीं होता कुछ भी. Central government can issue instructions under Article 365. Under Article 365, central government is authorized to give instructions to the state कि आपको ऐसा ऐसा करना है. You are going out of your limits यहाँ पे वहाँ पे. Give instructions as per 365. अगर आप वो instructions नहीं मान रहे हो, ठीक है? Then your action seems to be not in accordance with the provisions of the Constitution. And this is the ground for President's rule. And under Article 356, then President's rule can be implemented in your state. First, we will give you directions under Article 365. If you are not
obeying the directions or the commands of the center, then under Article 356 President's rule can be imposed on your state, because it will be assumed that the provisions in that state, the machinery in that state, the executive in that state are not working in accordance with the provisions of the constitution. Therefore, constitution failure has happened in the state. Then it's liable to be put under president's rule. Right? Next paragraph. In both the cases, the executive power of the center, extends to giving such directions to the state, as are necessary for the purpose. Look, this is the domain of central government's executive power. It can give what? Directions to the state. इन दो purposes के लिए जो हमने ऊपर लिखे, ठीक है? Full stop. Article 365 says, Article 365 है ये, 56 नहीं, 56 is President's rule. This is 65. Article 365 says that where any state has failed, to comply with, where any state has failed to comply with any directions given by the center, comma, it will be lawful for the president. To hold that a situation has arisen. कि situation अब arise हो चुकी है स्टेट में, किस चीज की? That a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. Thereby, the state can be put under president's rule. Using Article 356. ये हो गई दो वो चीजें जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन मिल सकती है, और अगर उसने वो डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन नहीं मानी, देन इट विल बी कंसिडर्ड as the government is not working as per the provisions of the constitution and president's rule can be imposed in that state. There are further other things also जहाँ पे direction of center is to be followed. Otherwise, same provision, same thing can happen to you. Under 365, if you are not abiding by these set, जो हम नया पढ़ेंगे, then under 356, President's rule will be applied. ठीक है?
कौन सी डायरेक्शंस? ए, एक तो ये दो और है चार. पहला, the construction and maintenance of communication system, communication lines, the construction and maintenance of communication systems or communication lines which are to be declared by the central government of national importance, national importance plus which has military importance. ठीक है, which has national importance or military importance. ठीक है. The communication systems or the communication lines, इसमें highway आएगा, इसमें telephonic communication आएगा, जो भी means of communication which has been declared by the central government of national importance or of military use or of military importance. ठीक है. Center can give directions to the state as how to construct and maintain them. If the state is not following, then the state can be given warnings. If the state is not following those warnings, it will be assumed by the President of India, based on this thing, that the state government cannot be run in accordance with the provisions of the Constitution. और वहाँ पे क्या लगेगा? President's rule. इस बात पे, ठीक है? The construction and maintenance of what? Communication assets. ठीक है. Second, रेलवेज के रिगार्डिंग इफ सेंटर इज गिविंग एनी डायरेक्शन टू द स्टेट, वो भी इस चीज में फॉलो होता है. स्टेट हैज टू कंप्लाई. बात आ रही है समझ? विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कंप्लाई, वरना सेम सीन होगा. ठीक है. थर्ड, विद रिस्पेक्ट टू मदर टंग, ठीक है, मदर टंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के चिल्ड्रंस, उनको एजुकेशन दो उनकी मदर टंग में. मदर टंग वाला, उसमें सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट, प्रोवाइड देम एजुकेशन टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप इन देयर मदर टंग. अगर स्टेट ने नहीं माना, इफ स्टेट इज नॉट complying with the instructions given by the center over mother tongue, this is also one cause where the president's rule can be imposed. It will be seen by the president as the government is not working as per the provisions of the constitution. One is the communication systems, ठीक है, of national importance and military use. Second is for the railways. Third is the mother tongue. Fourth is the any instruction given by the central government, any instruction given by the central government to the state governments for the welfare of SC and STs. ये चार और वो दो कितनी हो गई? 6. इन 6 कंडीशंस में the center has the power to direct the state. कि आप अपना एग्जीक्यूटिव पावर कैसे यूज करोगे. बात समझ आ रही है? Even if the law over some of the subjects कहीं पे state government is making, still the executive power of the center extends to give direction to the state कि इन 6 में, ये 4 और जो 2 अभी पढ़े, उनमें आप कैसे अपने executive power को यूज करोगे. If you are not compiling with that, if you are not obeying the orders of the central government with respect to these things, it will be considered that the provisions, the government is not working as per the provisions of the Constitution and it's liable for president's rule. Give the heading centers directions to the states. Centers directions to the states. Yeah. You write, in addition to the above 2 cases, in addition to the above 2 cases, in addition to the above 2 cases, the central government or the central government
is empowered to give directions to the states, in following matters, in following matters. In following matters. Number 1, the construction and maintenance, the construction and maintenance, the construction and maintenance of the means of communication, of the means of communication, the construction and maintenance of the means of communication, declared to be of national or military importance. Bracket close, ये bracket में लिखना, declared to be of national and military importance, bracket close, by the state. The maintenance and construction of these national assets by the state. अगर इसमें कुछ center is giving directions, state has to comply. ठीक है? Second, the measures to be taken, the measures to be taken, the measures to be taken for the protection, the measures to be taken for the protection of railways within the state, for the protection of railways within the state. Next, the provision of adequate facilities, the provision of adequate facilities to be made, the provision of adequate facilities to be made, adequate facilities to be made for instructions in the mother tongue, for instructions in the mother tongue, for instructions in the mother tongue at the primary stage, at the primary stage, at the primary stage of education, at the primary stage of education, to the children's belonging to linguistic minority groups, to the children's belonging to linguistic minority groups. Fourth, the drawing up and the execution of, the drawing up and the execution of, the drawing up and the execution of the specified schemes, the specified schemes, the drawing up and the execution of the specified schemes for the welfare of scheduled tribes, for the welfare of scheduled tribes within the state, for the welfare of scheduled tribes within the state. Within the state. These are the 4 plus 2 previous 6 conditions where the center is empowered to give any direction to the state, and if state is not compiling, center बुरा नहीं मानेगा कि center रूट जाएगा, center has the power to punish, ठीक है, with respect to these things. Right, the next heading, mutual delegation of functions, mutual delegation of functions.
ठीक है, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस मतलब you will make law, parliament will make law on union list, state legislature will make law on the state list, parliament and state legislature will make law on concurrent list. ठीक है, चलेगा ऐसा, इधर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इधर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लॉ मेकिंग में, इधर अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो पार्लियामेंट्री लॉ शैल प्रिवेल। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर एक्सरसाइज करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट एक्सरसाइज करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट एक्सरसाइज करेगा अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज मेंशन्ड। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये सब। बट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स, Constitution of India provides us a flexibility of intergovernmental delegation कि आप एग्जीक्यूटिव पावर्स को डेलीगेट कर सकते हो। यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, इस पे कौन एग्जीक्यूटिव पावर्स रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स ओन डिस्क्रिशन कैन गिव दोस पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, हमने लॉ बनाया, ये यूनियन लिस्ट पे है, स्टिल यू एक्सरसाइज इट। ठीक है, इंटरगवर्नमेंटल डेलीगेशन। State government makes law on a state list, ठीक है, and the state legislature makes law on the state list, and this law can be implementing power can be delegated to the central government. ठीक है, state can also delegate to the central government, and central government can also delegate to the state any of their executive powers, and this is known as intergovernmental delegation of functions. If central government wants to delegate some of its functions, executive functions, to any state or every state, ठीक है, president with the consent of state government, that state government जिसको आप अपना executive power बोल रहे हो exercise करने को, ठीक है, president with the consent of that state government will delegate some of the functions of union government to the state government, to the respective state government. It is the power of the President of India to delegate, ठीक है, some of the functions exercised by the union government to the state government with the consent of state government. ये यूनियन लेवल पे अगर आपको डेलीगेट करना है यहां से यहां एग्जीक्यूटिव पावर, अब अगर यहां से यहां करना है देन गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आ रही है बात? Here the president with the consent of state government will delegate the union executive functions to the state government. Here governor with the consent of the central government will delegate some of the functions of the state to the union government. ठीक है? Here the consent is important. Consent is mandatory. If consent is not given तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी union government cannot delegate the powers, executive powers through president to the state government unless and until state government gives his consent. मैंने क्या बोला? Through president. It's important. मतलब कोई और मीन्स है जहां से कंसेंट हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट के थ्रू करना है ये नेसेसरी यू नीड टू हैव द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। समझ आ रही है बात? इफ यूनियन गवर्नमेंट वांट्स टू गिव अवे सम ऑफ इट्स executive powers to the state through president, then the consent of state government is must. And the governor wants to give away the executive powers of the state to the central government. The consent of central government is must. There is another case.
if center wants to give what executive powers of the centers to the states or one state, in this regard, if parliament confers it, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उधर ही लॉ में लिख दिया that this will be implemented by state government. अगर ये लॉ यूनियन लिस्ट में भी बना है, सब्जेक्ट मैटर ऑन द यूनियन लिस्ट, उस पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, उधर ही उसमें लिख दिया that this will be implemented by the स्टेट गवर्नमेंट, तो इसकी कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है. If it is done by the Parliament of India, if it is done through president, then you have to secure the consent of the state government. अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर विल पास अ लॉ और उसमें लिख देगा दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट अदर वे अराउंड, इट्स ओनली वन वे. पार्लियामेंट कैन डू दिस, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू दिस. स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट impose its executive functions over the central government without its consent. चाहे लेजिस्लेचर से करे, गवर्नमेंट से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. The consent of central government is necessary when state wants to delegate its executive powers. The consent is only necessary when through president they are trying to delegate. ठीक है? If the government or the parliament is delegating the powers to the state government, parliament is delegating, then there is no need of the consent of the state government. ठीक है? समझ आई? लिखो. The president may, with the consent of state government, the president may, with the consent of the state government, entrust to that government, president may, with the consent of state government, entrust to that government any of the functions of the center. Any of the functions of the center. Any of the functions. Obviously executive functions. You write any of the executive functions of the center. Any of the executive functions of the center. Okay? President may, with the consent of the state government, entrust to that government any of the executive functions of the center. Full stop. The governor of a state, may, with the consent of the central government, the governor of the state may, with the consent of the central government, entrust any of the executive functions of the state, ठीक है? The governor of a state may, with the consent of the central government, entrust any of the executive functions of the state to the central government. और ये प्रोविजन जो स्टेट डेलीगेट कर रहा है थ्रू गवर्नर, ठीक है? दिस वाज नॉट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज added in the constitution. ये वाला provision, when state will delegate its powers through governor, this was added by 7th constitutional amendment act of 1956, जिसने वो पार्ट A, B, C, D इस ये पढ़ी है, हमने पढ़ा है कभी 7th constitutional amendment act. This amendment act deleted part A, B, C, D state schemes in India और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ये पास हुआ था, ठीक है? देखो, this
provision of state delegating its powers, this provision of state delegating its powers, this provision of states delegating its powers was added through 7th Constitutional Amendment Act 1956. Was added through 7th Constitutional Amendment Act 1956. ठीक है, next paragraph. If the Parliament of India and not the President, if the Parliament of India and not the President confers power on a state, then the consent of the concerned state is not mandatory. Is not mandatory. Is not mandatory. Full stop. Notably इस चीज को नोट करो यहाँ पे, notably the same thing cannot be done by the state legislature. The same thing cannot be done by the state legislature. State legislature ये power confer नहीं कर सकता without the consent of the central government. The same thing cannot be done by the state legislature. ठीक है? This is to foster, now we are coming to a topic that brings states closer, to foster cooperation among the states. If there is a dispute between two states with respect to the use distribution of water of interstate rivers, ठीक है, or the river valleys, that dispute will be solved by the parliament by making a law or a separate body, ठीक है. Nothing of this dispute will go to the Supreme Court और द हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देयर इज यूजुअली वन पार्टी दैट इज विनिंग, ठीक है. जब हमने लोक अदालत पढ़े थे, हमने लोक अदालत का प्रोविजन एक पढ़ा था, बेनिफिट, कि पोस्ट लिटिगेशन एनिमोसिटी इज लेस विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत. नफरत एक दूसरे के साथ बहुत कम होती है अगर लोक अदालत में आप मसले को सॉल्व करोगे. सेम केस इज लाइक है, इफ Parliament makes a tribunal for the dispute of interwater state,
दोनों स्टेट्स म्यूचुअली बैठ के वहां पे अपने मसले को बोलते हैं। ट्रिब्यूनल फंक्शन करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इट अलाउज देम टू बी मोर लीनियंट, ठीक है, वो अपना केस सामने अच्छे से रख सकते हैं। दिस डज नॉट हैपन इन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वहां ऐसा नहीं होता। वहां इधर योर लॉयर विल विन द आर्गुमेंट और देयर लॉयर विल विन द आर्गुमेंट, और किसी एक के फेवर में जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी एक के फेवर में डिसीजन जाएगा। एंड देयर विल बी रिजेंटमेंट, प्रोटेस्ट्स, पोस्ट लिटिगेशन एनिमोसिटी। In order to avoid this, Parliament has assumed this power that Constitution has conferred upon the Parliament, that Parliament by law can make any body other than Supreme Court and High Court to adjudicate the matters with respect to a river dispute. ये हुआ क्यों? Because the reorganization of states in India was done basically on the linguistic basis. ठीक है? Yes, sir. After Andhra Pradesh was carved in 1953, over the death of that Congress leader, Yes, sir. there was agitation or demand from different states that please give us the state recognition based on linguistic factor. तो फजल अली कमीशन आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, एंड देन द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956. 14 states and 6 union territories were created mostly on the linguistic lines. इसने ज्योग्राफी को वैसा नजर में नहीं रखा। तो जो एक पूरा स्टेट था जिसके थ्रू एक रिवर फ्लो होता था पहले, अब इसी को 2 या 3 स्टेट्स में हमने काटा बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, बट रिवर को हम काट नहीं सकते। अब रिवर जो था, जो पहले एक स्टेट में था, दैट इज नाउ फ्लोइंग इन 2 or more states. नाउ देयर इज डिस्प्यूट, Yes. ठीक है। पहला वाला स्टेट डैम नहीं बनाएगा क्योंकि मेरे वाले स्टेट में, लोअर स्टेट में पानी का फ्लो कम होगा, ठीक है, मेरे स्टेट से सबसे ज्यादा रिवर फ्लो हो रहा है तो ये मेरा है, इस पर कंट्रोल। वो बोल रहा है नहीं, मेरे स्टेट से ओरिजिन हो रहा है रिवर का तो मेरा कंट्रोल है। डिस्प्यूट स्टार्टेड, ठीक है। Yes. तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एमिकेबली कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट बाय लॉ कि आप कुछ बॉडी बनाओ, इंटर स्टेट व्हाट Water disputes. वाटर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो उसके थ्रू एक ट्रिब्यूनल बनता है जो इन 2 स्टेट्स का मसला देखता है। अगर उस डिसीजन के खिलाफ आपको वो डिसीजन पसंद नहीं आया, देन यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट एजुकेशन। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एजुकेशन मीन्स डिस्प्यूट को सेटल करना इन प्राइमरी फेज, इन फर्स्ट गो। दिस डज नॉट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि डायरेक्टली आप ये डिस्प्यूट कहां लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम करो और एमिकेबली सॉल्व करो बाहर। पार्लियामेंट एक लॉ से आपको वो बॉडी बना के देगा। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Yes. अब वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं है, आपको पसंद नहीं है, देन द अपील लाइज अगेंस्ट दैट डिसीजन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट द एजुकेशन, द अपील, ठीक है। Yes. You write it. Cooperation between the center and states. Cooperation between the center and the states. Cooperation between the center and the states. The Constitution contains. The Constitution contains. The Constitution contains provisions for the better coordination and cooperation. For the better coordination and cooperation for the better coordination and cooperation between center and the states. Between center and the states. As follows. As follows. Number 1. The Parliament can provide. The Parliament can provide for the education of any dispute.
for the education of any dispute. The Parliament can provide for the education of any dispute or complaint. The Parliament can provide for the education of any dispute or complaint with respect to the use common distribution and control of waters of any interstate river or river valley. ठीक है? This is Article 262. उधर रफली कहीं पे लिख लो. उसके बाद Article 263 for interstate councils. और इसके बाद वाला कोऑपरेशन करने के लिए among the states and the center is the interstate council under Article 263. मतलब अगर common interest का कोई भी matter है between states, it will be solved among the states. हमें council बनाएंगे interstate council. वहाँ पे हमारे chief ministers या governors as the case may be, chief secretaries, DGPs जो बैठेगा, ठीक है, interstate council. Usually chief ministers बैठते हैं, ठीक है. तो chief ministers will sit and will solve the common problem. कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. इससे क्या होगा? इससे बातचीत होगी, डेमोक्रेटिक वे में होगा और इजीली मैनर सॉल्व होगा. आपके हक में भी थोड़ा फैसला, हमारे हक में भी थोड़ा फैसला, एंड कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन विल रिमेन इंटैक्ट. Otherwise, when you will take these matters to court, you are two enemies fighting each other. तो वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का कोई कांसेप्ट ही नहीं होता. You have to win और दूसरे को आपको लूज कराना है. यहाँ इंटरस्टेट आपका ये है काउंसिल, तो इसमें यू विल सिट एमिकेबली डिस्कस, डेमोक्रेटिक वे में आप डिसीजन लोगे. कॉमन कंसर्न का कोई भी सब्जेक्ट होगा उस पर बात होगी. इससे ट्रस्ट, म्यूचुअल कंसेंट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इंक्रीज होता है. ठीक है, राइट. The president can establish under Article 263. The president can establish under Article 263 an interstate council. The president can establish under Article 263 an interstate council to investigate and discuss subjects of common interest between the center and the states. ठीक है.
full faith and credit is to be given throughout the territory of India. ठीक है, full faith and credit, respect, ठीक है, और allegiance, faith उस चीज में कि हाँ ये सही है, respect करते हैं हम किस चीज को, throughout the territory of India, किस चीज को, all the public acts, all the records and all the judicial proceedings of the center as well as state throughout the territory of India. मतलब if there is an act that has been passed in Punjab, ठीक है, and under that act there is a power of attorney that has been signed, ठीक है, रूल्स गवर्न करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को, बेचने को, खरीदने को, एफिडेविट बनाने में, पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, एंड दिस रूल हैज बीन मेड बाय द पंजाब लेजिस्लेचर. तो वहां पे आप उस लॉ के अंडर कुछ काम करते हो, जो वहां का पब्लिक एक्ट है पंजाब का, उसके अंडर यू हैव द पावर ऑफ अटॉर्नी और यू हैव द एफिडेविट और यू हैव द रिकॉर्ड, समथिंग यू हैव, ठीक है, एंड देन यू वेंट टू महाराष्ट्र विद दैट पब्लिक that record, ठीक है, with that power of attorney. The government of Maharashtra will give full faith and credit to your document. And same applies with the document of Maharashtra in Punjab, with in Haryana, in Meghalaya, in Tripura, in Kerala, in Jammu and Kashmir. ठीक है, central law, central act or the record, state act or the record is being given full faith and credibility throughout the territory of India. ठीक है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है यहाँ कश्मीर में फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड योर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, द आरटीओ इशूज यू व्हाट, द ड्राइविंग लाइसेंस. दिस इज वैलिड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लिखा है लाइसेंस पे, ठीक है, दिस लाइसेंस इज वैलिड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज रिटन ऑन योर ड्राइविंग लाइसेंस. इफ यू विल शो योर ड्राइविंग लाइसेंस इन केरला, आपके इस ड्राइविंग लाइसेंस की उतनी ही रेस्पेक्ट है जितनी वहां के ड्राइविंग लाइसेंस की है, ठीक है. दिस इज द फुल फेथ एंड क्रेडिट गिवन टू एवरी रिकॉर्ड डन अंडर एनी पब्लिक एक्ट. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का तो पता ही है, ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं है, बिकॉज दिस इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी. द ऑर्डर इज गिवन फुल फेथ एंड क्रेडिट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. समझ आ रही है बात? इससे क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, द रेस्पेक्ट, द म्यूचुअल ट्रस्ट इंक्रीजेस एज वेल एज सेंटर. ठीक है, राइट. लिखो इसको, बोर्ड पे लिखा है. ठीक है, लिखा. Another is Parliament of India can make a body for interstate trade and commerce. ठीक है, if there is any dispute arising between the states with regarding to trade and commerce, Parliament by law can make a body in order to amicably solve that dispute. अभी तक ऐसी कोई body बनी नहीं है, क्योंकि usually the interstate trade laws are made by taking the prior permission of the president. ठीक है, समझ आई बात? तो इसमें यूजुअली सेंटर गिव्स द परमिशन व्हेन सेंटर को लगता है कि हाँ दिस लॉ इज फाइन.
और अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है सेंटर सॉल्व्स इट थ्रू अदर वेज। अभी पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक दिस बॉडी बट अभी तक बनी नहीं है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड। जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड बॉडी बनाना, ट्रिब्यूनल बनाना, पार्लियामेंट हैज मेड इट मल्टीपल टाइम्स, लेकिन अभी तक ट्रेड एंड इसके रिलेटेड नहीं बना है। ठीक है, यू राइट इट, लिख के रखो फिर। The Parliament can appoint an appropriate authority. The Parliament can appoint an appropriate authority to carry out the purposes of the constitutional provisions. To carry out the purposes of the constitutional provisions. The Parliament can appoint an appropriate authority to carry out the provisions or carry out the purposes of the constitutional provisions relating to the interstate, to carry out the provisions of the constitutional provisions, to carry out the purposes of the constitutional provisions relating to the interstate freedom of trade, relating to the interstate freedom of trade, commerce, interstate freedom of trade, commerce and intercourse, ठीक है। These are some of the provisions in which through which the coordination and cooperation between the center and state is realized. ठीक है। इसके बाद there is one of the major provisions in the constitution that realizes the concept of coordination and cooperation among the center and the state. That is all India services. ऑल इंडिया मेनली जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो, मेनली कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज है? सर 3। कौन कौन सी? IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। We have 3 all India services as of now in the country. Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Services. Indian Foreign Service is a central service. ठीक है? Indian Revenue Service is a central service. What is the difference between these? वो हमें आगे पढ़ना है, गवर्नेंस में देखेंगे। यहाँ मोटा मोटा we will see IAS, IPS, Indian Forest Services are the 3 all India services. Initially, when we attained independence, we had only 2 all India services. ठीक है? This was Indian Civil Services and this was Indian Police, and it was replaced by Indian Police Services and this Indian Administrative Services. ठीक है? In 1947 itself. तो 1966 तक nothing like this was there, and in 1966 the third All India Service was created, Indian Forest Services, and as of now we have 3 what? All India Services. And who has the power to create this All India Service? Rajya Sabha. Parliament, No. sorry, Parliament. Parliament of India. Yes. Parliament of India. India has the authority, has the power to create all India services. It is the Parliament of India that creates all India services. But Parliament can do this only when Rajya Sabha initiates this proposal. ठीक है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राज्यसभा में अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द राज्यसभा व्हिच इज हैविंग, जब हमने पढ़े स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा इज हैविंग स्पेशल पावर. इट इज ओनली द राज्यसभा दैट कैन इंट्रोड्यूस a resolution to create all India service, and once Rajya Sabha has introduced this resolution, then Parliament can make this all India service or not. वो Parliament तक है, ठीक है? फिर उसके बाद लेकिन
खुद से पार्लियामेंट won't do it. This is the prerogative of Rajya Sabha. Rajya Sabha has to initiate the process of creating all India services. और राज्य सभा को ये पावर क्यों दिया गया है वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है तब. Rajya Sabha initiates parliament, but the question is Parliament of India makes all India services. ठीक है? It is created by Parliament. ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो एग्जाम में. When you see Rajya Sabha creates all India services, you out of hype, jaldbazi, you mark it as correct. That's incorrect. Rajya Sabha initiates, created by Parliament of India. ठीक है? अभी कह रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाओ, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस बनाओ, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज बनाओ. अगर ऐसी कुछ सर्विस बनानी होगी, इट इज द राज्य सभा दैट विल इनिशिएट द प्रोसेस एंड द पार्लियामेंट विल कंप्लीट इट एंड द पार्लियामेंट विल क्रिएट इट. तो इससे क्या होता है इन ऑल इंडिया सर्विसेज से? व्हाट इज द रोल ऑफ दीज सर्विसेज इन प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग सेंटर एंड स्टेट? बेसिकली हमारा मकसद अभी पढ़ने का वो है. We have 3 types of major services. All India services उसमें ये 3. We have उसके बाद central services. This is A part, B part and C part. State services. ठीक है? The officers of the central services are under the control of central government only. ठीक है? Be it the immediate control, be it the ultimate control. Immediate control भी ultimate control. The power of transfer. ठीक है? The power of suspension. The power of dismissal from the government. Everything with respect to the central services lies with the central government. State services. Everything of this nature lies with the state government. ठीक है? For example, if you are going to be an officer from Public Service Commission of any state, then you will be a state services officer coming under the immediate as well as ultimate control of state government. If you are qualifying the UPSC civil service examination, but आपकी rank या आपका खुद का preference कुछ अलग है, you are preferring central services, कोई सबसे पहले ही Indian foreign service रखता है, बचपन से है foreign service में जाने का, या Indian revenue services, then he or she will be the part of central services. His immediate as well as ultimate authority lies with the central government. But when you are the part and parcel of all India services, this has dual control. The immediate control lies with the state government. Matlab the power to transfer you, the power to suspend you, the immediate control, to take any disciplinary action against you, the immediate control. But the ultimate control lies with the central government. If you have to be dismissed from the service, या कुछ ऐसा कुछ आपके खिलाफ disciplinary action लेना है, इसमें Department of Personnel and Training (DOPT) is the cadre controlling department of IAS. ठीक है? Home Ministry. In this case, Ministry of Environment, Forests and Climate Change with respect to Indian Forest Services. So ultimate control lies over there and the immediate control lies over there. It has dual authority. पहली बात ये. दूसरी बात, these officers enjoy the same rank pay scale जब ये एक ही promotion level पे होते हैं. ठीक है? If you are at the same level in IAS and the same level officer in IPS and the same level officer in IFS forest services, you enjoy the same allowances, same salary. ठीक है? दूसरी बात. तीसरी बात, these officers are trained by the central government. They are not trained by state governments. Labasna, Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, the dream place of any IAS aspirant, where he goes trained by central government. ठीक है? This Hyderabad में है Police Academy, trained by central government, trained by central government. यहाँ पे भी. तो इसमें क्या होता है? There is uniformity given to you with respect to nation building while we are providing training. जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू ट्रेनिंग, यू आर एन ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कार्डर, पंजाब कार्डर, तमिलनाडु, यू आर एन ऑफिसर ऑफ इंडिया. ठीक है? इंडियन यूनियन.
तो वो सब कुछ आप सब ऑफिसर्स में वो इंस्टिल करते हैं, नेशन बिल्डिंग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। व्हेन यू एज ऑफिसर्स गो टू योर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, you become DGPs, you become chief secretaries, you become secretaries, principal secretaries, ठीक है, joint secretaries, then you have the same enthusiasm, those ethos आपके अंदर जो आपको ट्रेनिंग के दौरान डाले गए थे, and you have your colleagues in other states। आपको कोई प्रॉब्लम होगी स्टेट टू स्टेट, इंटर ट्रेड, आप फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ होम में हो एज IG, आपका फ्रेंड दूसरे स्टेट का IG है, यू हैव सम इशू, यू कैन सॉल्व इट एमिकेबली, ठीक है, एंड देयर आर pre-defined set of guidelines and rules how these officers should work in order to get uniformity in the administration, ठीक है। थोड़े थोड़े स्टेट वेरिएशंस होते हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी होती है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, एंड DGP ऑफ तमिलनाडु एंड DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड फॉलो सेम रूल्स। थोड़ी स्टेट वेरिएशंस होंगी लेकिन मोर और लेस दे आर सेम इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन द स्टेट, ठीक है। आपके ही कलीग्स है यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे, एंड यू टॉक टू देम, यू एमिकेबली सॉल्व द डिस्प्यूट, ठीक है। दिस इज थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज दैट देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। लिखो ऑल इंडिया सर्विसेज, all India services. There are three all India services. There are three all India services serving the Indian Union. Serving the Indian Union. There are three all India services serving the Indian Union. IAS, IPS and Indian Forest Services. ठीक है, full stop. The members of these services occupy top positions. ठीक है, under both center and states. क्योंकि आपको सेंट्रल डेपुटेशन भी होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका कलीग होगा का, यू विल एमिकेबली सॉल्व आप उनसे बात करके, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज ऑक्यूपाई टॉप पोजीशंस अंडर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड सर्व देम बाय टर्न्स, but they are recruited and trained by the center. UPSC आपको रिक्रूट करेगा, ठीक है, एंड ट्रेन आपको सेंटर करेगा, उसके बाद आप स्टेट में जाओगे अपना फंक्शन अंजाम देने के लिए। नेक्स्ट लाइन, these services are controlled jointly by center and the states. These services are controlled jointly by center and the states. Center and the states, full stop. The ultimate control lies with the central government. The ultimate control lies with the central government, while the immediate control rests with the state government. ठीक है, next line, through all India services, high standard of administration is maintained. High
standard of administration is maintained in the center, as well as in the states, as well as in the states. ठीक है? As well as in the states. Full stop. They help to ensure uniformity of the administrative system. They help to ensure uniformity of the administrative system. They help to ensure uniformity of the administrative system throughout the country. They help to ensure uniformity of the administrative system throughout the country. And they facilitate cooperation. They facilitate cooperation, coordination, and joint action. They facilitate cooperation, coordination, and joint action on the issues of common interest. Between the center and the states. ठीक है? इसमें कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के लिए एक और चीज है, इंटीग्रेटेड judicial system. Second is emergency provisions, जिनसे coordination, control सब कुछ effectively बैठता है. And third is integrated judicial system, emergency provisions, and third is office of the governor. ठीक है? ये तीनों हमने पढ़े हैं अलग अलग different chapters. We have dealt with the judicial system extensively, we have dealt with the emergency provisions extensively, and we have dealt with the office of governor extensively. These three are also used in order to have coordination and cooperation among states and between states and the center. And this ends your administrative relations between center and state. Tomorrow we will do financial relations. Sir, ये आगे 5.6 and 8. ये भी लिख लो, लेकिन but we have done this Yes. अलग अलग chapters में ही.